Bonjour les amis, donc je suis avec notre cher guide, avec Ranjan, Ravi Ranjan ji. Moi je me trouve à Bihar, surtout à Bodh Gaya, pour visiter le fameux temple de Mahabodhi Temple, donc de Bouddha. Et lui, il va me faire découvrir, c'est un guide local, donc si vous voulez venir ici, contactez-moi ou contactez-lui directement. Donc il va vous faire visiter en hindi et puis en anglais. Je pense pas qu'il parle français. नहीं मैं तो हिंदी Hindi, English. Voilà, donc voilà, il va nous faire découvrir et puis je vais traduire les choses en même temps. Et puis on va faire une petite jolie vidéo après avec le montage et tout. Et voilà, restez connectés avec nous. का फुटप्रिंट्स एंड अशोका पिलर्स ये सब चीजों का निर्माण करते थे क्योंकि अशोका बुद्धिज्म में चले गए थे। बिल्कुल। तो अशोका ने ये महाबोधि कलिंग वॉर के और बाद कलिंगा जो युद्ध हुआ, पुलिस में बहुत काफी लोग वहां मारे गए, तो अशोका बुद्धिज्म में आ गए थे। ओके। तो अशोका ने यहाँ पर बौद्ध विहार बनवाया, 30 फीट बौद्ध विहार बनवाया, 30 फीट 7 मीटर्स। तो 6th सेंचुरी BC में बुद्ध यहाँ पे आए थे, सिद्धार्थ। उस टाइम पे ये पूरा जंगल था, ये जंगल का नाम था उरुवेला, और अभी ये बोध गया के नाम से जाना जाता है। और इसी को बोलते थे मगध साम्राज्य। तो मगध वॉज वेरी ह्यूज किंगडम। ये गंजार, गंधार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ऑल द पार्ट्स ऑफ मगध। तो उस टाइम पे ये मगध का राजा बिंबिसार थे। सरस्वती माँ का मंदिर है ये। सरस्वती माता का मंदिर बहुत कम ही जगह मिलता है, देखिए। ये बहुत ही प्राचीन सनातन हिंदू धर्म का मंदिर है ये। बाग देवी, माँ बाग देवी सरस्वती प्राचीन मंदिर। यहाँ लोग जो ही मनोकामना मांगते हैं पूर्ण होती है, अंदर भी जा सकते हैं। मन्नत मांगते हैं पूरी होती है। अच्छा, ये राउंड पत्थर क्या है भैया? ये गोला है ना? शिला है। अच्छा, शिला है जी, भगवान बुद्ध जब शुरू सुजाता से खीर खा के आए थे, अच्छा, तब फाल्गु नदी को पार किए तो माता पर नजर पड़ गया। यही वो जगह है जहाँ पर सिद्धार्थ बैठ के तपस्या कर रहे थे। अच्छा। ये सनातन हिंदू धर्म को जो मानते हैं ना, ये मानना है कि सिद्धार्थ जब वो निरंजना नदी को पार करके आए हैं यहाँ, Nusamde temple Mahabodhi. यही है ना महाबोधि हाँ, temple? महाबोधि टेम्पल यही है। Donc c'est la Mahabodhi temple. Donc la totale hauteur de cette temple c'est 180 pieds en pieds, donc en feet. 2002 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ है सर। Ok. Donc c'est bien déclaré dans la site de UNESCO aussi, non? हाँ, यूनेस्को। UNESCO. ये 2002 में हुआ है, Et puis नालंदा हुआ है 2016 में। donc c'était déclaré au UNESCO en 2002. Voilà. ये जो बेस लेवल है सर, ये अशोका बनाए हैं। Ouais. इसी तो 4 टावर फ्रॉम द 4 साइड्स, 1 2 3 एंड 4, ये अशोका का है। तो सेकंड फ्लोर जो है वो गुप्ता डायनेस्टी का है, जो समुद्रगुप्त निर्माण किए थे। बख्तियार खिलजी जो आया था, बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाने के बाद उसने स्तूपा को ऊपर से 30 फीट वो खंडित किया था, जो येलो कलर का दिख रहा है, जो गोल्डन कलर। हाँ, ऊपर से 30 फीट को तोड़ करके, खंडित करके, इसमें जितना भी बुद्ध का मूर्ति था उस सबको खंडित करके, तो जितना भी पुराना वाला स्तूपा है सबको खंडित करके ये ग्राउंड लेवल से 30 फीट यहाँ मिट्टी डाल दिया था। ओके। वाज ऑल अंडर द मड 600 years। ये 6 साल बड़ी रहा, ये मिट्टी के अंदर रहा है। तो कनिंघम ने इस जगह का जब उत्खनन किया तब ये निकला हुआ। तो कनिंघम के द्वारा 1883 में इसका रेनोवेट किया। ओके। सुजाता मंदिर। ओके। तो सुजाता के जो पिताजी थे महाराज सेनानी, वो उस गांव के राजा थे, द हेड ऑफ द विलेज। ओके। तो उन्हीं के नाम से वो गांव को पुकारते थे सेनानी विलेज, जहाँ पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। मैं गया वहाँ। हाँ, और एक कुशीनगर में जहाँ इनका महापरिनिर्वाण हुआ भगवान। अच्छा। ये उनका 6th वीक भगवान बुद्ध का ध्यान करने का जगह है। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो जब तपस्या में ध्यान में लीन थे, तो आंधी तूफान जब बरसा गई, तब ये मुचलिंद नाम का नागराज निकल के भगवान बुद्ध को रक्षा किया। तो बर्मा देश का लोग ये मूर्ति बना, ये भगवान बुद्ध का मूर्ति बना के दिए, और ब्रिटिश ने ये तालाब बनाया। तो नीचे से देखिए,
Ok. Voilà, donc on se trouve devant le petit bassin, donc où on voit au milieu donc le Bouddha qui est protégé par un serpent. Donc c'était la 6e semaine de la méditation lorsqu'il était là. Voilà, donc avec le donc il s'appelle le Mulching Sarovar. Donc c'est un petit lac en étant un Mulching Sarovar. ये अशोका के टाइम का है जो एक्सकवेशन से निकला है। Ok. Donc les petits stups qu'on voit ici, donc les petites stupas, donc c'est la période de Ashoka, lorsqu'ils avaient redécouvert le site. Voilà. Donc vous voyez, au départ les stupas étaient de cette taille-là. Ça donne vraiment envie de venir ici visiter, voir le temple qui se trouve juste derrière moi, extraordinaire. Ça tombe bien parce que je suis au mois de août et puis c'est la saison de la pluie. Donc la pluie est partout. J'avais pris le train hier soir pour arriver d'Ajmer jusqu'ici. Donc je suis arrivé à 6h30 du matin et j'ai commencé ma visite. Donc c'est un temps assez agréable. Heureusement qu'il n'y a pas de pluie. Voilà. Voilà, tout doucement on avance vers le temple pour y aller. जो बख्तियार खिलजी के द्वारा सब मूर्ति तोड़ा गया था वो है। Ok, lorsque le roi Bakhtiar Khilji avait détruit le temple, vous pouvez très bien voir les statues donc, on avait retrouvées par terre. Donc ils ont fait un petit assemblage de toutes les statues. Vous pouvez bien voir donc, les pieds, la tête, les mains cassées. Voilà, donc détruit complètement. Je vais faire une jolie photo comme ça vous pouvez voir ça de près. Merci. Voilà, c'est le 7e endroit ou la 7e place ou la 7e semaine, surtout la 7e semaine où le Bouddha il avait fait la méditation apparemment dans cette sous cet arbre. Donc vous voyez ici juste derrière moi. Donc lorsqu'il avait fini sa méditation de 7e semaine, il y avait 2 marchands qui étaient là, qui avaient décidé d'arrêter leur business entre guillemets et puis venir chez Bouddha et puis vraiment donc aller dans le bouddhisme et puis donc ils se sont rendus ici sous les pieds de Bouddha et puis ils sont partis à Burma, en Birmanie actuellement, donc avec un cheveu de Bouddha et puis avec un petit ongle. Et là, ils ont fait une promotion, une sorte de... Ils ont pris le défi de promouvoir la bouddhisme en Birmanie. Donc actuellement, le cheveu et les ongles de Bouddha se trouvent là-bas. Comme on trouve la dent de Bouddha à Kandy ici au Sri Lanka. Donc lorsque vous visitez le temple tôt le matin ou le soir, vous allez découvrir ça. Donc si vous suivez vraiment la vie de Bouddha, donc c'est les pas où il est passé, donc avec les méditations, avec tout ce qu'il avait fait. फिफ्थ जनरेशन ट्री है। Donc c'est la 5e génération de cet arbre qui existe ici. Voilà. जो पहला बोधि वृक्ष था वो अशोका की पत्नी ने कटवा दिया था। Donc le premier arbre a été coupé sous les ordres de la femme de Bouddha. सेकेंड जो बोधि वृक्ष था वो बंगाल का राजा शशांक ने कटवा दिया था। Et puis le deuxième arbre a été coupé par le roi de Bengale. थर्ड बाय नेचर खत्म हो गया था। Troisième, c'était détruit par la nature tout seul. फोर्थ बाय नेचर खत्म हो गया। Fourth, le 4e aussi, c'était détruit par la nature. तो ये फिफ्थ जनरेशन जो ट्री है सर ये 150 इयर्स ओल्ड है। Voilà, donc le 5e que vous voyez ici, que je vois, je vous montre, c'est... यहाँ पहला बोधि वृक्ष था तो अशोका का बेटा और बेटी महेंद्र संघमित्रा ने पहला वृक्ष का शाखा को ले आकर श्रीलंका में लगाया अनुराधापुर में।
फिर कनिंघम श्रीलंका अनुराधापुर जाके वहाँ शाखा लाती है। Ok, voilà, donc comme quoi, si vous avez vu ma première vidéo de Sri Lanka, donc c'est le fils et la fille de Ashoka qui avait pris une petite branche du premier arbre qui avait amené ça en Sri Lanka, à Anuradhapura. Et puis donc, si vous avez vu ma vidéo, donc je vous ai bien montré l'arbre Bodhi Vraksh où on a fait la méditation, qui est aujourd'hui sublime dans un état assez agréable, assez extraordinaire. La toute petite statuette que vous voyez ici, donc une femme qui tient une petite gamelle. En fait, c'est la gamelle, on l'appelle, à l'intérieur c'est le kheer avec le riz et du lait. Bon, voilà, donc il avait préparé pour Bouddha parce que lorsqu'il faisait la méditation, il ne mangeait pas grand-chose. Donc à la fin, il était devenu tout maigre. Voilà, donc elle avait offert ce kheer au Bouddha. Voilà, c'est l'empreinte de pied de Bouddha qui avait été fait sous les œuvres de Ashoka, le roi Ashoka, qui était devenu l'adepte de Bouddha après la Kalinga Yuga, après la mort de Kalinga, après la guerre de Kalinga. जगह जहाँ ज्ञान मिला उनको, Ok. मेन जगह ये। Voilà, donc si vous voyez, c'est une petite trône, en fait l'emplacement où il avait reçu oui. Donc ici, il faisait la méditation et puis il avait reçu l'éducation complète. มีรูปร่างดีมีปัญญาดีมีฐานะดีมีครูอุปชฌาย์อาจารย์ดีมีกัลยาณมิตรดีเราได้มีบุญมีกุศลจึงได้เดินทางมาถึงณสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์เมืองพุทธคยา Zéro. ต้นฤาษีมหาโพธิ์อันเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ของ Voilà, la petite séance de méditation, c'est les gens de Tibet. ของพระพุทธองค์ Ce sont des gens qui viennent de Tibet. เราในขณะนี้ Tibet. เราได้ทำการบูชาสักการะ Non, ce sont des gens qui sont venus de Thaïlande. इनका पूजा हो गया। Ok, et dans quelques instants, donc ils vont faire la พัน prière. เตภควาอิมังโพธิรุกขเจปิยังสังเวชนียังฐานังยถาคตงหิสัทธัสสะกุลปุตตัสสะทัสสนียังอิทาขยาสีเสตถาคเตนะสะเทวะเกอภิสัมพุทธังสาธุโนพันเต Voilà, donc je me trouve actuellement avec le proviseur de l'école, donc il fait gratuitement l'éducation pour les enfants. Donc lorsque vous venez à cet endroit, à l'entrée à gauche, il y a une petite école. Donc si vous voulez faire une petite donation, ça serait super agréable. Vous allez voir, c'est un tout petit village perdu, très très peu de touristes, uniquement les gens qui savent, uniquement eux qui viennent. Donc ça sera une super opportunité de faire une petite donation ou faire un petit cadeau aux enfants ici dans l'école. Donc comme il montre voilà, donc ils sont pas beaucoup, कितने हैं भैया? यहाँ पे 60 बच्चे हैं। Il y a uniquement une école de 60 des enfants, donc il n'y a pas beaucoup, donc n'hésitez pas. Si vous venez dans cet endroit-là avec des crayons, des cahiers, tout ça, vous pouvez laisser ici, donc ils seront ravis. Vous allez voir, donc c'est pas comme en Rajasthan qu'il y a beaucoup des enfants qui courent après vous ou des choses comme ça. C'est vraiment paisible, ils sont super agréables et c'est un petit village. Merci.
Vous risquez de mourir. Donc Bouddha, il a pris la... Voilà, donc lorsqu'il a entendu ça, donc il a dit oui, c'est pas faux, donc il faut que je mange. Donc il a accepté le kir et puis il a mangé. Et à partir de là, donc il a pris la force. Voilà, normalement, comment ça se passe? Donc, lorsque vous venez à cet endroit-là, donc je vous avais expliqué pour l'école aussi, donc il y a une petite école pour 60 d'enfants. Lorsque vous venez là, donc vous faites un parcours de ce petit temple pour 3 fois. Donc, si vous souhaitez, vous le faites, sinon vous ne faites pas. Donc, normalement, tous les touristes, ils font un parikrama. Donc, on appelle ça parikrama. C'est pour les 3 tours. Des fois, on fait 7 tours. On fait les 3 tours du temple. Parce qu'apparemment, donc, une fois que Bouddha, il avait accepté le kir, et puis il était parti d'ici au Mahabodhi Temple pour se mettre sous l'arbre de Bodhi Temple, Bodhi Vraksh. Voilà, donc lorsque vous venez, faites 3 fois, regardez les temples, les statues, vous pouvez visiter le village et puis donner une petite donation si vous voulez. Donc vous allez voir, donc c'est assez sympa, ils ont rien. Voilà, merci. Oui, moi je suis, voilà, donc je suis pas loin du temple de Sujata, le temple où elle avait offert le kir à Bouddha. Donc là, je suis chez elle, c'est-à-dire comme c'était une fille d'un bois ici. Donc derrière moi, c'est pas un stupa, c'est un sous forme de stupa, c'était sa Raj Mahal. En fait, c'était sa maison. Mais une immense maison, vous pouvez voir. Donc c'était l'entrée principale et la sortie. Et toute la partie derrière moi, c'est son petit palais. Donc vous allez voir, comme vous pouvez voir, donc déjà les briques qu'ils ont utilisées, c'était d'autrefois. Donc ils sont encore là, donc qui ne se cassent pas. C'est super bien fait. Voilà, on avance. Si. आप देख सकते हैं सर कितने बड़े बड़े ब्रिक्स Voilà, donc vous pouvez voir la taille. Donc ils étaient énormes les briques. Mais par contre, c'était pas très haute, c'était plat en fait. नीचे में Vous voyez, c'est assez long mais plat, mais ils étaient pas très hauts. ये सब रूम्स है सर ये सब Donc रूम्स c'est la partie qui est là, donc apparemment ils sont tous les petites et les grandes chambres. Donc यहाँ पे रूम थे ना, हाँ हाँ ये तोड़ दिए ये सभी रूम्स थे ओके rooms अभी अंदर वहाँ। कुछ भी नहीं, नहीं अंदर कुछ भी बस यही ये रूम्स थे Vous pouvez voir là, cette partie là qui commence ici jusque là-bas, donc ils étaient les chambres. देखिए कितने पुराने ब्रिक्स Vous voyez, donc les briques que je disais, ils sont assez, pas tout à fait carrés, mais assez plats et longs. Et les briques actuelles qu'on fait, ils sont assez souvent assez hautes, mais petits. कितने पुराने जो है ना Briques. Voilà, maintenant on est en train de découvrir la statue de Bouddha qui est d'une hauteur de 80 pieds. Voilà, donc il était... Voilà, donc l'inauguration était faite par le Dalai Lama en 1989. जापानीज का एक बहुत बड़ा सेक्ट है दाइजोक्यो Donc, दाइजोक्यो सेक्ट जो है उसके द्वारा जो है ये मूर्ति जो है ओके, ये कितनी दूरी पे है मेन टेम्पल से? 1 किलोमीटर
Ok. Donc la statue se About trouve à about 1 kilometer. 1 kilomètre et demi du temple important de Bodh Gaya. Voilà, donc de chaque côté des statues, il y a 5 statues de chaque côté des disciples de Bouddha. 5 à gauche, 5 à droite. Voilà, tous les disciples, donc chaque disciple a un mudra. Par exemple, ici, vous pouvez voir les mains comme ça. Ici, c'est les mains pliées. So we respect Mudra. Ok. Voilà, en bas, c'est marqué leur nom. Mahachanakya, Rahula. Rahul का पुत्र. Rahul, donc c'est la statue de Rahul. Là, c'était le fils de Siddhartha, de Bouddha. Ça, c'est très bien fait, vraiment à visiter, avec toutes les statues et tout ça. Mais par contre, la meilleure période, sans doute que ça va être à partir de octobre, novembre, décembre, janvier, février. À part ça, à mon avis, il fait très chaud, donc c'est un peu difficile. Et puis chaque fois, il faudra quitter les chaussures, rester pieds nus, marcher en chaleur. S'il fait vraiment chaud, c'est quasiment impossible. Donc prévoyez la visite dans la bonne période, avec une très bonne saison comme ça. Vous pouvez bien profiter de ce monument assez important. Voilà, donc je suis devant le monastère de Sri Lanka ici, Mahabodhi. Voilà. On ne peut pas entrer parce que ce n'est pas autorisé. Cet endroit se trouve juste en face du temple de Mahabodhi. Voilà, donc qui se trouve juste l'opposé, donc juste devant moi. Bro.